While people across the globe have been affected by sudden job losses, women have faced a disproportionately harsher impact. Tonight, in our special series, The COVID Times, we take a look at two women who were left jobless due to the pandemic and felt determined to carve out new paths for themselves in midst of a pandemic. 39% of the global workforce are women. But ironically, when the pandemic-led recession hit and jobs had to be cut, statistically, there were more women who lost their jobs than men. Across the world, 54% of those who got the pink slip were women. And for Janvi Joshi, this statistics was a reality. In April, Janvi lost her job as a patient care executive with a private hospital. To make matters worse, her husband Samir, a wedding photographer, also saw his business drying up due to the lockdown. But Janvi is not someone who gives up easy. She decided to multitask and experiment. We thought let's go for this and let's try to sell mangoes. We sold around 40 to 50 this mangoes boxes. After that mango season went. We have done the onion business also. So let's try the fish also. So abhi fish ka bhi thoda demand kam ho gaya. So I thought what next? So I was already having a online shopping group. एक महीने में I sold around 30 to 35 paitanies. Recession costs jobs. That is a given. And global data points to women finding it more difficult to be employed back once the pall of slowdown lifts. So when 30-year-old Sarika Rane, an instructor with the National Deaf School, realized it was going to be difficult in the days ahead, she took up a side business to supplement her reduced salary. तकलीफ नहीं हुई थी। अप्रैल से बाद पेमेंट हाफ पेमेंट आने लगे तो स्कूल फी थी, बच्चों का स्कूल फी था, LICs थे, पोस्ट का अकाउंट है उसमें पैसा भरना था, तो वो सब मेरे स्टॉप हो गए थे। 6 महीना हो गए, अप्रैल से सितंबर तक का पेमेंट मेरा स्टॉप हो गया। Now juggling two jobs, Sarika continues to teach her students through online videos as she sits at her shop stall in Matunga. There were many people who were employed, lost their jobs during COVID-19, and it was very difficult for them to run their monthly household expenses. Out of adversities, they found opportunity to build small businesses which are getting good response as of now. People believe that they will continue to do so because salary or jobs will not be sufficient in the coming times. With camera person Mangesh Ambre and Rakesh Salaskar, this is Mustafa Sheikh for India Today. Well, time now for a good news story of the day, and it comes from Jammu and Kashmir's Kathua district. A woman named Pooja Devi has become the first female driver of Jammu and Kashmir and is being hailed for breaking stereotypes by the locals, shattering the ceiling. A mother of 3 from Kathua district in Jammu and Kashmir is going viral on social media. Pooja Devi has become the first woman bus driver from the Union Territory. She ferried passengers for the first time last week. बचपन से मेरा ड्रीम था, जैसे मैं छोटी थी तो जब भी सोती थी तो सपना आता था कि मैं कोई बड़ी गाड़ी चला रही हूँ, ट्रक या बस चला रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं तो ऐसा कर ही नहीं पाऊँगी क्योंकि गरीब फैमिली से हूँ, तो ना ही उन्होंने माँ बाप ने पढ़ा नहीं पाए मुझे लगा कि मैं कैसे पैसा कमाऊंगी, कैसे गाड़ियाँ खरीदूंगी और कैसे लूँगी, मुझे अपनी कोई गाड़ी नहीं देगा। तो फिर मुझे बस मैं थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल करती गई बच्चों के साथ साथ भी, तो अब इस मुकाम तक पहुँची हूँ। Pooja's dream has come true. It wasn't an easy journey. She had to face many hurdles including opposition from her own family. हस्बैंड मेरे मजदूरी करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। उन्होंने बोला कि ये जो लाइन है ड्राइविंग वाली ये अच्छी नहीं है, लेडी के लिए ये लाइन अच्छी नहीं है,
लेकिन मैं उनको यही बोला कि मतलब मानती हूँ कि अच्छी लाइन नहीं है, लेकिन मैं कोई अपने साथ गलत नहीं होने देती, ना ही मैं गलत करूँगी। In her 30s now, Pooja learned the ropes from her maternal uncle before she applied for license to drive heavy vehicles. When Pooja hits the road, her 7-year-old son accompanies her. 2 बेटे 1 बेटी है। छोटा बेटा ये 2nd में पढ़ रहा है, इससे बड़ा जो है वो 7th में पढ़ रहा है, बेटी 10th में पढ़ रही है। थोड़ी देर तो मैं इसको अपने साथ ही रख रही हूँ जब तक स्कूल नहीं लग रहे। The young woman driver has become a star locally, winning accolades for taking a bold decision. आज ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि लेडी होकर वो बस चला रही है, उसका हौसला बहुत बुलंद है। बाकी महिलाओं को भी हम सलाह देते हैं कि उनको भी अपने घर से बाहर निकलकर काम करना चाहिए। जैसे वो औरत होकर एक बस चला रही है, वो भी जम्मू कठुआ रूट की, बहुत हौसले वाली बात है ये। बाकी वालों की भी उनसे प्रेरणा मिलनी चाहिए कि उनको भी बाहर अंदर जाकर काम करना चाहिए। इस लाइन में आके जो हमारी गृहस्थी में जो महिलाएं रहती हैं, वो कामकाजी महिलाओं के लिए दायरे निश्चित किए हुए थे। ये भी उस महान लड़की ने ही बोलूँगा उसको, उसने सारे विकल्प खोल दिए हैं। एक लेडी ड्राइव करी थी, पहले तो मैं शॉक हो गया, फिर जब मैंने सोशल मीडिया पे देखा तो हर जगह ही उनके बारे में लिखा जा रहा है, हर बोला जा रहा है कि एक लेडी होकर और वो बस ड्राइव कर रही है। ये हमारे लिए काफ़ी प्राउड की बात है। It's another first for women in male-dominated professions. Braving all odds, Pooja Devi has become the first woman passenger bus driver in Jammu and Kashmir. Her decision to take up a job considered taboo for women will definitely help in changing the mindset of the society. With video journalist Neeraj Kumar, this is Sunil Bhatt reporting from Jammu for India Today. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.